Assalamu alaikum, everyone. Officially starting this. My name is, as you all might have known by now, my name is Muhammad Mutahir. I'm the program coordinator here at ETL Online. And when I tell you, I hope you can all see my screen. When I tell you that I'm the program coordinator at ETL Online, let me first tell you that ETL Online hai kya? I've prepared this brilliant slide deck, bada pyara sa. ETL Online stands for empowerment through learning. And when I say it stands for empowerment through learning, what I mean by it is that we are a non-profit tech community, an organization that is an educational initiative, revolutionizing Pakistan's digital landscape by equipping youth with real-world project experience, industry-relevant skills, and job-ready confidence to thrive in today's competitive technical environment. I don't know if you can see my second slide or not, but ETL Online is a tech community, and there should be a brilliant slide about who we are, right? I hope you can see it. So ETL Not yet. Online, tech community, and we have different initiatives as well over here. Can someone confirm what you're seeing right now on the screen? We're still on the first slide. All right. Now the second one, right? Yes, All yes. right. So our mission is to bridge the gap between industry and academia. जो लोग हमें follow करते रहे हैं, they know by now that we have a team of 40 plus internationally experienced industry experts, each having more than an experience of 20 plus years, to say the least. Okay? And they're all adept and experts in their own domains. So ETL Online provides world-class mentorship to shape Pakistan's next generation of tech leaders. To say, to list a few of our initiatives, community portal का तो आप सबको पता है. We have a community portal for collaboration and collaborative learning for students. इसके अलावा a few exciting initiatives of our own apart from university ambassadors are FYP support. आपका FYP है your final year project, so you can turn them into an entrepreneurial idea, an impactful solution to start your own business through our mentorship support. Open source project contribution, जो OSPC लिखा हुआ है, it's our open source program where we teach you and mentor you about open source contributions, real life contributions in the world. For example, VLC and Linux का आप सबने नाम सुना होगा. For example, Kali Linux for offensive and defensive security, right? Cybersecurity. So that is an open source project where the community is contributing to that project daily. And that actually leads to very, lucrative job deals and job offerings. Next up, we have iRise, which stands for I Am Rising with Real Industry Skill Experience. ये हमारा mentorship program है, जहाँ पे we're hiring mentors and training them on real project ideas, sponsored by real, project sponsors from all over the world. Next up, we have Career Help. Career Help again, or I think someone is speaking. Please raise your hand if you have to speak. Moving on, Career Help. हमारे जो ETL mentors हैं, they're providing one-on-one mentorship and career help to all of our students as well. अब career help के बाद mentorship है, which is another initiative of our own, जहाँ पे we're connecting university students, especially our university ambassadors, with skilled industry experienced professionals, right? Moving on to our social media, I'm co-hosting today with our moderator, Ms. Hamna. Ms. Hamna, over to you. Assalamu alaikum everyone and a very good evening. I am Hamna Jabeen and I will be co-moderating for this session today. Now that you guys have a hold of what our initiatives are, let's talk about how you can access them. For that, you have to be a part of our community. हमारी website etlonline.org को visit करें and become a member of our pool. Ask your questions, give your suggestions and interact with us. If any one of you wants to learn more about our initiatives, we have the details on our website. Oops, sorry. Everyone, please mute your mic. If you have anything to say, please raise your hands. So I was saying, if any one of you wants to learn about an initiatives, we have the details on our website. Just go over there, click on an initiative, and you will have all the details that you want to know. All things considered, we have a lot of Zabardast initiatives planned in future.
So to stay updated, हमें Insta, Facebook and LinkedIn को follow करें so that you do not miss out on any event. Without further ado, let's move on to today's session. It is one of the most in-demand and impactful fields in tech world today, computer vision. Today we have among us Dr. Ifat Zafar, a senior data scientist and machine learning engineer with extensive industrial experience from solving real-world computer vision and machine learning problems using cutting-edge AI technologies. She has a vast experience of working in AI for digital pathology, satellite image analysis, and consumer products. She has also mentored and managed many junior members of her team and data scientists. Currently, she is working in the field of oncology and precision medicine as a senior data scientist at AstraZeneca in UK. So whether you're just starting out or simply curious about stepping into the world of tech, tonight might be your spark that sets your computer vision journey in motion. So get ready to take notes, ask questions, and learn how data science can truly become your superpower. I would request Ma'am Effort to take over the session from here. Thank you very much, Hamna. Assalamu alaikum, everyone. Um, thank you for having me here. I'm really excited and pleased to be here, and really excited to contribute some of my knowledge and experience I have over the years on this platform. Today I will, my topic of discussion is in the area which I have the most experience, and also I think it's very important topic in the area of AI. Because this particular area, which is the computer vision, I will say that this has tremendous applications in everyday life, everywhere around us. So I will start my presentation. Let me share the screen first. Can you everybody see that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So before I start, आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कंप्यूटर विजन आज का जो टॉपिक है एक्चुअली this will be at very high level. It's kind of high level introduction to the field, and what are the main algorithms, technologies there, what are the applications, and what are the current trends in this area. I'm not going to go into much of the technical depths because every topic in this area actually requires a separate session. So, also, I'm not sure in the audience actually what is the level of experience you have this, but I can do more sessions in future depending upon the interest and everything. But today I will just introduce you to the topic at the very high level. I hope that's okay with you. Yeah. So सबसे पहले I'll give you my own introduction here, my own experience in this field, कि कैसे जो है वो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कंप्यूटर विजन AI मशीन लर्निंग. तो मैंने एक्चुअली लाइक यू ऑल नो कि मैंने भी IIUI से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है अलॉन्ग विद फाइज़ा मलिक. सो उसके बाद जो है मैंने अपने ही सिटी में बिलोंग करती हूँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से. वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एज अ कंप्यूटर साइंस लेक्चर यूनिवर्सिटी में. और आफ्टर फ्यू years teaching there, I got the opportunity to get a scholarship from HMRC, जो कि वहाँ पे उन्होंने कुछ जो थे स्टाफ के लिए जो है वो सब अवेलेबल था, और कुछ आई थिंक कुछ टेस्ट वगैरह थे, उसके थ्रू जो है वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं अब्रॉड जाके जो है 1 year के लिए मास्टर्स कर सकूँ.
So actually, you can say that my journey started from there. So I came here to UK to do my master's in computer science. Computer science में मास्टर्स जो मेरा था मास्टर्स, वो तो एक जनरल कंप्यूटर साइंस का ही फील्ड था, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे आपको पता है कि इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स, बट हाउ डिड आई एंटर इनटू दिस फील्ड ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग? वो एक्चुअली ऐसे था कि जो हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो था एक इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने ऐसा था कि इमेजेस को फ्यूज़ करके आपने जो है ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज इमेजेस को कंबाइन करके, और जो है वो एक इमेज जो है वो you had to fuse the images to get another image which was like a good quality image. So that was the first time जब मैंने image processing में जो है वो काम करना शुरू किया, और वहीं से जो है then I carried on my PhD which was in this area. वो PhD जो है कहाँ से, Loughborough University actually, in Loughborough UK. That's from where I did my master and also did my PhD. My PhD was in this area of machine learning. This was the time जब आप आजकल जो सुनते होंगे डीप लर्निंग, CNN और ऑल दोस, ये एरा नहीं था। ये वो एरा था जबकि 2000s, जब हैंड इंजीनियर फीचर्स जो है वो इस एरिया में यूज़ होते थे, और मैंने उसी टाइम पे जो है वो PhD की, जिसके अंदर मैंने जो है ये सारे फीचर्स और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यूज़ की। वहाँ से मास्टर्स करने के बाद जो फर्स्ट टाइम मैंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था, वो मेरा जो है मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, वो जो था वर्किंग एट द लफ्बरो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एज अ रिसर्च एसोसिएट। अगेन मैंने जो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि एकेडमिक्स और उससे रिलेटेड थे, जो इस एरिया में थे, वो मैंने किए। लफ्बरो यूनिवर्सिटी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने जो है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो मेरा स्टार्ट हुआ था, वो था company called ARM. I don't know if you know about that, but this is a company which is the very big company which do the chip making. और ये जितने भी आपको मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के अंदर जो चिप्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है वो आर्म्स की मेड होती हैं। तो मैंने इस कंपनी में काम किया, और ये वो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मैंने किया, ये जो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व थे वो था ही, मेरा फील्ड ही कंप्यूटर विजन था। सो मैंने फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो था ऑन एज, लाइक एज डिवाइसेस, यानी कि ऑन द जो है चिप। अगर आपने कंप्यूटर विजन को लेके आना है कि जैसे इन कैमरा सर्वेलेंस कैमरास के अंदर आपने पर्सन डिटेक्शन और पर्सन फेस डिटेक्शन से रिलेटेड जो है वो काम आपने देखा होगा, जो कैमरास जैसे आपके फ़ोन के अंदर जो है फेस डिटेक्शन वगैरह, ये सारे फीचर्स। तो एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ वर्क वाज इन्वॉल्व इन माय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन आर्म, एट आर्म, सो आई वाज इन्वॉल्व इन दिस। उसके बाद जो है आर्म के बाद जो है नेक्स्ट जो मेरा जर्नी था, वो अनदर कंपनी जो कि एयरबस है उसके साथ था। एयरबस जो है ये यहाँ से मैंने जो है वो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है एयरबस का, उसके अंदर काम किया, जहाँ पे जो है वो सैटेलाइट इमेज एनालिसिस के अंदर मैंने जो है काम किया। सो मैंने ये जो एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट जो है मैं आई एम गोइंग बैक, आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम लफ्बरो यूनिवर्सिटी, देन आर्म, एयरबस, एंड देन उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट एयरबस के बाद जो है अनदर अपॉर्चुनिटी आई गॉट टू वर्क इन डाइसन। डाइसन इज़ आप जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसके अंदर जो है इनके फेमस जो है वो वैक्यूम क्लीनर्स हैं, और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है वो द रोबोटिक्स वगैरह में भी काम करते हैं। सो आई वर्क विद द डाइसन as my next role in the lead machine learning engineer, and then from there I was also associate principal engineer. डाइसन के बाद मेरा नेक्स्ट जो करियर है वो मोस्ट रिसेंट जो अभी जो मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, वो एस्ट्राजेनेका है, जो कि बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोफार्मा, और इसमें मैं जो है काम करी अगेन इन द कैपेसिटी ऑफ डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग। यू कैन से कि डिफरेंट कंपनीज अगेन डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग जो है वो समटाइम्स
इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, लेकिन अंडरलाइंग जो है एक तरह से काम एक ही जैसा होता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि वो उसको क्या नाम देते हैं. सो एस्ट्राजेनेका में भी मैं अभी करंटली काम कर रही हूँ उनके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में. एस्ट्राजेनेका में आपको पता है कि ये कोविड वैक्सीन आपको याद हो अगर, तो वो एस्ट्राजेनेका की तरफ से ही इन्होंने बनाई थी. और अभी जो है वो इनका मेन रिसर्च ड्रग्स वगैरह जो डिस्कवरी बनाते हैं, और उसके अलावा जो मेन इनका जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, और जिसके अंदर ये जो है ड्रग डिस्कवरी से लेके प्रिसीजन मेडिसिन, जिसमें वो ये चेक करते हैं कि जो पेशेंट कस्टमाइज जो है वो ड्रग्स जो है उस पर रिसर्च होती है. तो मैं उसमें काम करती हूँ डिजिटल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, अगेन जो है वो एज इन द रोल ऑफ सीनियर डेटा साइंटिस्ट. यहाँ पे मैं आपको कुछ ये प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू है जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है कि मैंने क्या काम किया, लेकिन थोड़ा सा मैं इन डिटेल बताऊंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्म में काम करते हुए मुझे जो एक्सपीरियंस था वो ऑन एज यानी कि ऑन डिवाइस रियल टाइम जो है वो कि कैसे आप काम करते हैं, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट द कंप्यूटर विजन ऑन द ऑन डिवाइस विच इन्वॉल्व पीपल डिटेक्शन, ट्रैकिंग, फेस डिटेक्शन. सो ये इस एरिया में मैंने काम किया, ये एप्लीकेशन थी. देन उसके बाद जो अनदर इंटरेस्टिंग जो मेरा करियर में था, सेटेलाइट इमेज डेटा पे काम करना, तो जो कि एक टोटली डिफरेंट आप देखें कि एप्लीकेशन आ जाती है जिसमें लार्ज स्केल इमेजरी, सेटेलाइट इमेजरी, और उसमें जो है वो आई यूज टू वर्क फॉर डिफरेंट कस्टमर्स इन एयरबस बिकॉज दे हैव डिफरेंट कस्टमर्स इन डिफरेंट एरियाज लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल, ऑयल एंड गैस कंपनीज. और ये जो प्रोजेक्ट जिसमें मैंने काम किया सेटेलाइट इमेजरी में, दैट वाज रिलेटेड टू actually how do you detect and segment out the fields from the satellite imagery. This was related to some insurance companies क्योंकि वो जब sometimes फ्लड्स वगैरह आ जाएं या इस तरह से, तो फिर वो ये देखते हैं कि या कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो, तो समटाइम दे वांट टू सी कि हाउ द लैंड इज़ इफेक्टेड एंड एवरीथिंग, और उससे इंश्योरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये जो है फार्मिंग से रिलेटेड वन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज देयर. सो my role there was to actually come up with the algorithm to look at the satellite imagery and segment images, fields from these images. And these images were across the UK, Europe, and some of the American, North American countries. So इसके बाद जो है कमिंग नेक्स्ट डाइसन का मैंने आपको जिक्र किया, जहाँ पे मैंने कंज्यूमर प्रोडक्ट, दैट वाज अनदर new product category they were working on, that was actually related to the skin analysis. So skin analysis another, आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में sometime apps होती हैं जिसमें आप ये देखना चाहते हो कि हाँ जी how your skin health is looks like. So this actually requires input from the different kind of sensors. RGB cameras हो सकते हैं या sometime other sensors, UV cameras, so which looks underneath your skin, and then you analyze how your skin is looks like, or like how is the skin condition. So this is mainly from the cosmetic kind of industry. Because they want to see come up with a product which is like which gives you the skin analysis and then recommend you some skin products. And then how do you apply and how it makes effect over the time on your skin, whether it improves, what is the recommend different products related to skin wrinkles, acne, or different skin issues. So that's another project which I was involved on. There are some other projects. Actually, all these projects kind of make up, give you another good idea of the applications of computer vision. You must have got the idea like how vast are the application. There are unlimited cases where you can use it. You can think of anything related to image, video. You will see that computer vision is involved there. So in these projects, here again, some of these were while working, one of the projects was vegetation risk management on the railway track side. This is like, when there are sometimes the trees which are next to the train's tracks, they sometimes fall over the train tracks. So in this case, there's a lot of risk involved. Because the companies, the Network Rail, for example, they were the customers here, and they wanted to see how they can avoid it. So avoidance was through
coming up with the algorithm which can detect from the LiDAR images, which were the depth height images, to see the canopy of the trees, because if the tree's canopy is more close to the train tracks, it means that it is a hazard to the track. So it was like detecting those trees and then trying to like alarm them or tell them that, okay, these trees which are near the track are more are the potential risk to the train track. Similarly, I worked on the project which was malaria prevalence, which is to see in the African regions, like certain type of mosquitoes are very harmful, and they uh, cause different type of health issues. So they wanted to check which are the regions, which kind of malaria is more dominant in which regions, and what they can do about it. And then most recently, which the work I'm doing is in AstraZeneca, is actually looking at the histopathology images, which is like tissue samples from the skin, which usually taken for the biopsies or something from the when the cancer is detected. And then through these samples, images, I'm trying to find out, okay, by taking the drugs, cancer drugs, what is the efficacy of these drugs on the cancer patient, whether they are responding to these drugs or not. So this is kind of telling, giving a like which drugs will be effective or for the precision medicine. Yeah, so this was just an introduction, and also, yeah, yes, Ma'am, we have a Danica, question in the chat. yes. The question is, for your work at AstraZeneca and skin analysis and medical imaging, आपने mention किया कि you worked for you worked on medical image processing, right? Did you also work to annotate the image and leverage the DICOM standard? Yes, annotation. These are two different. The skin analysis data, which I worked in Dyson, that is actually more for the cosmetics purposes. So that's not medical images. Those are the people facial images. And yes, for the algorithms I worked on, we had to annotate the data. In the AstraZeneca, data is labeled, but labeled not at the because these are very large scale images, they just label the whole slide, but not the individual patches. So that brings another challenge. But that's, yes, in both cases, we had to label the data with the help of experts. Did I answer your question? I hope so, ma'am. Yes. Okay. Assalamu alaikum. I want to make a request. If you could speak more in Urdu, ताकि हमारी अच्छा, audience के लिए बेहतर हो जाए समझना. Of course, जो terminology है वो तो English में ही होगी, but हाँ. ठीक है, क्योंकि मुझे sorry, थैंक यू फाइजल, because I was not sure which medium you prefer here. So चलो ठीक, natural, of course, because आपने मतलब जो हाँ, technical terms है वो तो अंग्रेजी में ही बोलनी है, but ये कि otherwise ठीक है, we prefer ठीक Urdu. है. Thank you. यस, या प्लीज डोंट बी शाय. जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है वो आप प्लीज मुझे रोक कर पूछ सकते हैं. मुझे नजर नहीं आ रही चैट, तो इसलिए है Yes, ma'am. मुख्तार, आपको प्लीज आप लोगों में से किसी Allah को has a बोलना question. पड़ेगा. Yes, Hello, ma'am. Sure. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. May I ask a question? हाँ जी प्लीज. Basically, आपने फायजा नाम है ना आपका? मेरा नाम इफ़त है. Ifat. अच्छा, Ifat, basically, I want to just ask about the question regarding the Zenica. You have told me at the last that your experience from the pharmaceutical industry. तो आपने इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से अपनी फील्ड को चूज किया कि डेटा एनालाइज में, वो थोड़ा मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई. दरअसल मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर. बेसिकली मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, or I have a 18-year experience in the multinational company, and I want to just capture all the skills which is related to like a data initiating of data or these things. So that is the reason
I want to know about that. If any person who are in pharmacists, they gain the skills for prepare about the new era, maybe in 2029 or some year else. तो आप मुझे थोड़ा गाइड करोगे कि हम किस तरीके से अपने आप को वो करते हैं, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल है और अब्रॉड की है, आई थिंक, है ना? जी एस्ट्राजेनेका, जी मैं इंग्लैंड में ही हूँ और इधर एस्ट्राजेनेका जी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसके लिए ये है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं और आप एआई के अंदर आना चाहती हैं, तो उसके लिए यही है कि अभी मैं आपको आगे जाके स्लाइड्स में थोड़ा बताऊंगी कि किस तरह से आप क्या क्या स्किल्स आप लर्न कर सकते हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो ये बेसिकली आपको जो है ये सारी स्किल्स जो है वो एक्वायर करनी पड़ेंगी थ्रू लर्निंग, और इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस, बिकॉज अगर आपका एआई का बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर विजन का, देन डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच लर्निंग ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू कैन बिल्ड इट अप। बट सो आई विल एडवाइस कि आपको मैं आगे जाके स्लाइड्स में बताऊंगी कि कैसे है, सम रिसोर्सेज आई विल शेयर एज वेल। सो ओके। और सेकंड, मुझे स्किन के हवाले से मालूम करना था कि इस टेक्नोलॉजी को आप कैसे, क्योंकि बाकी चीजें तो रेटाइनल और फेस एक्सप्रेशन, फेस डिटेक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट फैमिलियर ऑल ऑफ, स्किन को कैसे आप वो रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या ये भी टच वाले उसमें आता है? जी, क्योंकि मैं कंप्यूटर विजन से बात करें तो कंप्यूटर विजन का मतलब ये है कि हम इमेजेस को ही लेके और उसमें से रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर पिंपल्स हैं स्किन पे, तो इमेजेस आप पिंपल्स की लेंगे और उसमें आप मशीन को ट्रेन करेंगे कि वो लर्न कर सके कि पिंपल की डेफिनेशन जो होती है बाय गिविंग इट डेटा जो कि इमेज डेटा होगा। तो ये जो भी अगर कंप्यूटर विजन की बात हो रही है तो उसमें जो इनपुट डेटा है वो इमेजेस ही होंगी जिसके साथ वो लर्न करेगा। उसके साथ जो है अदर मोडेलिटीज़ जो है वो हम इनपुट देते हैं, जैसे कि अगर आपके पास इमेज है और उसके साथ आप टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं एज एन इनपुट। लेकिन मेनली जो है इमेज जो है वो इनपुट थी, और मैंने जो काम किया उसके अंदर इमेजेस ही इनपुट थी। ये है कि सेंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, सिर्फ आरजीबी इमेज सेंसर्स नहीं होते, बल्कि यूवी जो कि आपकी अंडर द स्किन जो सबसे है, जैसे कि यूवी आपको पता होगा, यूवी रेज, जैसे कि आपने अगर स्किन सन ब्लॉक लगाई हुई है और आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी इफेक्टिव है, तो आप यूवी कैमरास के थ्रू वो देख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो है कैमरास सेंसर्स के कॉम्बिनेशन से आप जो है ना वो इनविजिबल को विजिबल बेसिकली करके और फिर ये कर सकते हैं। तो यस, तो इसके लिए इमेजेस ही यूज़ होती हैं और उन्हीं से आप डेटा ट्रेन इनपुट होता है और ट्रेन करते हैं। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज क्या इसमें भी है कि जो कैमरा की डिटेक्शन होती है, जो मशीनरी डिटेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है कि आइदर जैसे लाइक का सेंसर होते हैं कि जो कि पॉकेट डिटेक्शन होता है कि आइदर एम्प्टी है, कलर डिटेक्शन है और समथिंग एल्स? हाँ जी, वो आपने अगर Excuse me, ma'am. डिटेक्ट करना है। One request, a little जी request. I think जो अभी हमें questions मिल रहे हैं, they're a bit too beginner friendly. So let's move on with the session, and we'll ask the questions in the end with more detail. हमें after all your explanations, right? हाँ जी, चलें, हाँ ठीक है, क्योंकि आई थिंक काफ़ी अभी रहती है प्रेजेंटेशन, तो मे बी वी Yes. क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड। So ठीक है। Matahir, this is Arslan. One request, maybe these questions are very valid questions. So let's connect towards the end, or after this one, I can really answer a lot of questions related to this pharmaceutical, life sciences, and healthcare industry also, right? From that perspective, okay. Let's connect the offline wherever these questions are coming, okay. Yes, sir. We'll take that at the end, and we'll announce that at the end as well. Thank you. Mhm. So please everybody note down your questions, और अगर by the time इफ़त की खत्म होता है तब तक बीच में कुछ आपने कुछ समझ नहीं आ रही है तो absolutely you're welcome to ask. लेकिन अगर आखिर तक आपका कोई सवाल जवाब नहीं मिला है during this presentation, तो please note down your questions and we'll answer them. Yep. Thank you. ओके, हाँ जी, ओके। सो सबसे पहले जो है जस्ट हाई लेवल कि एक्चुअली व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन आपको नो के like 60% of our brain
actually is involved in processing the vision data. So this sense, the vision is a very important, you can say the visual information is quite important, and it is the most dominant sense which we have and which we use actually to navigate in this world. आपको पता है कि हम without any physical connection through your vision, you can perceive the world around you. You can navigate the world. It helps you to recognize faces, read expressions, detect any kind of danger, or make any type of decisions in real time every day. So this also tells us that how important and how powerful and complex this visual perception is. And in the computer vision, what we are trying to do is actually trying to replicate the same thing, the same ability in the machines through the computer vision. So we are trying to make the machines to learn to see and then try to interpret and understand the information from those images, which makes it very challenging, and at the same time it becomes very valuable for us. So एक तरह से हम कंप्यूटर विजन के थ्रू जो एक तरह से आर्टिफिशियल परसेप्शन जो है वो हम देने की कोशिश करें मशीन्स को, सो दे कैन ऑल्सो डू द थिंग्स which human eyes can do. So that's very high level kind of definition, you can say. We have, sorry, 1 minute, I think I skipped one slide. I want to go back. Yeah, just click on the link. So in the computer vision, basically ये है कि how do we get an image on a very basic and simple level, what it is like. How do you take an image? So you have a scene, like wherever you have a room, you have outdoor scene or whatever, and that needs a lighting. Light is a very important source, so there has to be some kind of light when you are taking an image. So when the light falls on any of the scene, any of the surface, the light scatters in different directions. And some of the light, when we have a camera placed on that room or wherever the scene you have, some of the light enters to the camera. And that's how that light which goes through the camera forms the image in your machine, which is the computer. And then you have your machine vision software which is installed in that. For example, if you have a object detection software installed on your computer, or you have a package there, or for example you have a camera where you are taking the faces or clicking the faces, then it will try to, then the machine vision system takes that image, which is a 2D representation of a 3D world, and then it tries to interpret and try to translate and make the representation out of it and understanding of the world. So that's kind of on a bigger picture, like what the computer, in the computer vision, how it takes the image and how do you interpret that. Next thing is that, okay, in the computer vision, there are some core tasks which are there. So computer vision is formed based on maybe 4 these, which I have listed here, 4 tasks, core tasks. And what are these? First one is classification. So what is classification? Classification is, if we have an image and we want to know, okay, what is this image? For example, ये जो आप screen पे देख रहे हैं, you see this is a classification of numbers right now. So इसमें क्या है कि आपने अगर screen पे number 9 है, तो आपने ये find out करना है कि okay, this is number 9, this is number 5, या आपने कोई आपके पास एक image है जिसके अंदर एनिमल्स की फ़ोटोज़ हैं. सो कैट की है तो कैट, डॉग है तो डॉग. और मेनली क्लासिफिकेशन के अंदर ये होगा कि जो आपके पास इमेज होगी उसमें जो डोमिनेंट जो आपने जो पिक्चर कैप्चर करनी है उसमें जो डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है उसी के बारे में आपको यू विल गेट टू नो. दैट्स द क्लासिफिकेशन.
So most of the time, the main picture will just have the object you want to know about to classify. So that's called classification task. So that's one of the core tasks of computer vision. Then comes object detection. So what is object detection? Now the object detection and how it is different from classification. In the classification, I said that in the image, you will mainly just have one object, which is your focus point, and you want to know what it is. In object detection, in one image, you will have more than one objects, or you will have different objects, and you also want to know about each of the object and also their location. So that's called object detection. So for example, on this screen, you see there is a scene on the seaside where there are many people, then there's some things on the sky, and you want to find out what is this each object in this and where is the location. So these are the bounding boxes. It's actually the location कि ये कहाँ पे है. Similarly, on the road sign, you see the different cars. It's telling, okay, these are car, this is truck, this is lorry. Like you are trying to localize and also trying to tell what is each object. So that's called object detection. So it's different from classification. In classification, you just have one object and you're telling what it is. Here you are also localizing where is each object and what is each object. So that's object detection. After that, we have the third one, which is very important. That's called object segmentation. So segmentation, how it is different now? Can you find out any difference? इसमें difference ये है कि अगर हमने अपनी इमेज के अंदर ना सिर्फ और ज़्यादा प्रिसाइज होना है, यानी कि पिक्सल लेवल पे जाना है. पिक्सल क्या होता है कि पिक्सल आपको आई होप कि आपको पता है. पिक्सल ये है कि जो बेसिक जो यूनिट होता है जो इमेज का, दैट्स द पिक्सल. लाइक इमेज इज़ मेड आउट ऑफ पिक्सल्स. सो ईच ऑफ द सो अब इसमें यह है कि जो अगर हमने पिक्सल लेवल पे एक्यूरेट होना है, यानी कि हमने अगर ईच पिक्सल लेवल को बताना है कि वो क्या है, तो दैट्स कॉल्ड सेगमेंटेशन. सो दिस इज़ गोइंग इवन एट मोर डिटेल लेवल, कि इसमें हमने सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ नहीं करना कि रफ, बल्कि हमने एग्जैक्ट कंटूर ड्रॉ करना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है. सो इस चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि अगर हमने ये आई है और इसमें हम देख रहे हैं कि सारी जो वेन्स हैं और एग्जैक्टली हमने देखना है कि कहाँ कहाँ जा रही हैं, या हम एक्सरे है और उसके अंदर हमने एग्जैक्टली देखना है कि बोन्स को ट्रेस करना है. और तो ये चीज़ें जो है, और इसी तरीके से आपने स्किन के ऊपर देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि मोल्स हैं और हमने इसका कंट्रोल ड्रॉ करना है कि कहाँ पे है. तो ये सारा जो है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन. और ये जो है एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर विजन का टास्क है. फिर उसके बाद आ जाता है पोज एस्टिमेशन. पोज एस्टिमेशन क्या है? पोज एस्टिमेशन जो है ये मेनली एज द नेम सेज कि इसमें हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि पोज क्या है किसी चीज़ का, ह्यूमन का. सो पोज किस तरह पता करते हैं कि वो ये है कि आप उस पर्सन के जो है ना की पॉइंट्स, यानी कि की पॉइंट्स क्या हैं कि उसके शोल्डर पे, बाजुओं पे, एल्बोज, जॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फिगर आउट करते हैं कि वो कहाँ पे हैं. सो उन चीज़ों को कनेक्ट करके दैट्स हाउ इट tries to figure out the pose of the person. So pose of the person is really important because इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से मे बी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए हो सकती है, जिनको जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी. आपने देखा होगा कि कैसे हम मूव अराउंड करते हैं ह्यूमन, जब आप बॉडी हैंड्स मूव करते हैं, हैंड जेस्चर एनालिसिस, बॉडी मूवमेंट्स, इन सब के अंदर जो है ये एक तरह से पोज एस्टिमेशन ही यूज़ हो रही होती है, और ट्रैकिंग जिसके थ्रू जो है ये सारा अचीव किया जाता है. तो ये जो है कंप्यूटर विजन का कोई भी जो टास्क है उसके अंदर ये जो कोर आप देखेंगे कि कोर जो है कंप्यूटर विजन की वो यही टास्क होते हैं, और इन्हीं से कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स मेक कंप्यूटर विजन. अब कंप्यूटर विजन की हमने बात की कि इसके अंदर ये कोर टास्क हैं, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर विजन के अंदर है, लाइक इन एनी अदर AI डोमेन और मशीन लर्निंग, डेटा जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा उसके बगैर, यानी कि जो अर्लियर एरा था कंप्यूटर विजन का, उसके अंदर हम जो है टू मच डेटा नहीं भी हो तो हम वी कुड स्टिल डू द जॉब. लाइक हमें फ्यू इमेजेस के थ्रू जो है वो हम हैंड इंजीनियर फीचर से कर लेते. लेकिन अब जो हमारे पास टाइम एरा है जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन रिसोर्सेज भी हैं और डेटा की अवेलेबिलिटी है, नाउ वी कैन यूज़ द डीप लर्निंग एंड द ट्रांसफार्मर मॉडल्स विच आर हेवली रिलाइड ऑन द डेटा. सो हमारे पास डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बन यहाँ पे हमारे पास है. तो
देयर आर सम पॉपुलर कंप्यूटर विजन डेटा सेट्स इस एरिया में, जो कि डिफरेंट जो मैंने आपको कोर टास्क बताए हैं उन सब से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा में भी आप लोगों ने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबल जो कि इस एरिया में काम करते हैं। इमेज नेट एक बहुत ही पॉपुलर डेटा सेट है जो कि जिसको यूज़ करके बहुत सारे जो हमारे एआई के जो मॉडल्स हैं कंप्यूटर विजन में वो उसके ऊपर ट्रेन हुए हैं, और जिनको फिर हम लेके और फिर फर्दर जो है उसकी उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं अपने डेटा पे। सो इस तरह के बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जिनके यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए नाम, सम ऑफ द डेटा सेट्स जो कि डिफरेंट तरह के जो टास्क हैं जिनमें यूज़ होते हैं, और आप लोगों को इनके नाम पता होने चाहिए या इनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वो डेटा सेट्स हैं जो कि एकेडमिक्स और बोथ जो इंडस्ट्री दोनों में यूज़ होते हैं। और एकेडमिक्स में ये है कि इन्हीं डेटा सेट्स के ऊपर कोई भी रिसर्च या नई जो होती है वो इन डेटा सेट्स को यूज़ करते हैं एज अ बेंचमार्क और फिर इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। सो इसलिए आप लोगों को इन डेटा सेट्स का पता होना चाहिए। अच्छा जी। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस की तरफ कि कंप्यूटर विजन की जो है वो क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं। सो मैंने कुछ ये वीडियोस जो है यहाँ पे मैंने सोचा कि ये आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको एक जो है वाइडर पिक्चर और देंगे कि क्या आप जो है एडवांस जो है हमारे पास कंप्यूटर विजन में हो। 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. I think I'll stop this one here, just give you another application. So this was one of the applications. This is like the latest trends now. So this is like in the retail market, that's what is happening now. That's where the computer vision is heading towards the applications. This is another, which is Even uh, is quite a marvelous feat of engineering nonetheless. What enables it to detect hazards up ahead? How does it then go about making sense of that information? Is it better at driving than human beings? Join us today as we pop the metaphorical hood and take a peek into how autopilot actually works. For an eye-opening introduction to just how sophisticated Tesla's driving algorithm has become of late, take a look at this video released back in January 2020. Merging input from an array of smart sensory devices, the car's onboard computer is clearly capable of identifying and tracking its fellow vehicles on the road in real time. Not only that, it's able to differentiate between an impressive range of other potential hazards besides. Everything from lane lines and painted arrows to crossings, stop signs, trash cans, the incline of the road up ahead, and even random puddles are all noted and addressed, at least as quickly, crucially, as a human being could spot these things. So how does it do it? At the most basic level, visual feedback is fed into the system via Tesla's 8 onboard cameras. 3 of these are mounted on the windscreen, each slightly different from the other and suitable for very different. The car's main front-facing camera is calibrated for visual recognition up to 150 meters. There's also a wide-angled camera that can see more broadly up to a range of 60 meters. I think I'm just stopping here because it's a bit long video, but आपको थोड़ा सा इसके जो है वो ideas हो जाएगा कि क्या applications हैं. Similarly, some more application related. Today, augmented reality is one of the core capabilities of Lockheed Martin's digital transformation.
Augmented reality integrates as-designed engineering data visualizations into real-time, real-life environments as holographic representations and other images. This technology has been strategically implemented and is bringing significant value to programs, missions, and customers across all phases of the program lifecycle. Customers leverage AR to experience detailed, life-size, and immersive views of hardware prior to detailed design. Engineers using So yes, so these are some of the applications, exciting applications, what is happening in the area of computer vision. I hope this gives you some more motivation and excitement to learn this area. Sorry, I'm just stopping the next video. I'm just conscious about the time. मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बस some more applications list down की हुई हैं कौन से areas, not only retail, sports, autonomous driving, all these domains, and these are some big companies which are working in this area. So I'll move to the next slide. So yeah, so here I'm just giving you an idea about how computer vision has evolved. So the root of this computer vision actually goes back to 1966 when at MIT this was like a summer project from an undergraduate student where the first time they tried to use the computer vision project and tried to work on it. It was very complex and hard problem for them at that time, but that was the first time. This was the first project in 1966 when they were trying to attempt to do something in that. It was about identifying objects in the images. Since then, this field has evolved dramatically. You can say in the 1990s and 80s, initially there were rule-based methods, and it came early on. It started all with the edge detection algorithms, like, and then उसके बाद जो next है, it in 2000s actually it started coming up with the models which were learning the patterns from the label data. And there were some also algorithms like feature extraction, hand engineered features. Maybe you have learned about some of the feature engineering techniques like Hawk, SAFT, all these algorithms. These were actually we used to ourselves extract the features from the images and try to learn with the help of machine learning algorithms. But the real breakthrough actually came in 2012 with this AlexNet CNN model, deep learning model. That was when this model in combination was with ImageNet data. It actually, there was a challenge, ImageNet challenge, which was on the ImageNet data, and it actually, the accuracy of this model surpassed the one which was through the traditional methods of using the hand engineered features. Since then, we are seeing that there's an explosive progress in this area. In CNN, from object detection, segmentation, now we have entered into the area where we have different new architectures, which is the transformer-based models, which has totally changed the architectures which CNN were based on. And then now it has moved from based on the transformer. Now we have foundation models. There are different, there's so many every day. There is it's very difficult to even keep up with these, but all these foundation models, which are the combination of images and multimodality, text, all those. So these, some of the names like Dino, SAM, Clip, these are all different names of the foundation models which are there. Similarly, Gen AI, which is the generative AI, which is generating the images and videos. That's another
hot area in which, so these are all where we will see, maybe you have heard about DALI, stable diffusion, all these are algorithms are there in the GenAI. So now you can see that how far we have come from the early days of 1966 to this now is just like going very rapidly progressing and going ahead this area. I'm just trying to now give you some idea of some modern architectures in computer vision. I know कि शायद आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, लेकिन I just want to just touch on those because at least you should know कि so the modern architectures, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही हूँ स्टार्टिंग पर convolutional neural network, CNNs जिनको आप कहते हैं. So these actually, like I said, that the actual revolution came in the computer vision with the deep learning was in 2012 with the AlexNet, which is a CNN-based architecture. So basically, these CNN architectures, how they are different is that they itself learn from the data. So the difference was from the previous one was that I said that हम खुद फीचर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते थे. सो दिस इज़ लाइक अ मैजिक, अ ब्लैक बॉक्स. इसको यू जस्ट गिव इट अ राइट डेटा और फिर यू सी द आउटपुट्स. सो इसमें यह है कि it is totally driven by the input data. So it's data driven methods. So CNNs are based on the data. And the core of this is like it is a collection of filters. Filters is like image के ऊपर जैसे कि आप जैसे कि आप you can see on the screen, there is like 3x3 filter right now, which is it keeps looking at the image, going over and over. It's just like shifting and then trying to find out some patterns. Some patterns is जैसे कि you can see it takes the image is actually pixels of the inside the computer, they are just the numbers. So it goes over the numbers and then tries to, starting from the very low level मतलब कि starts from looking at the edges and then it goes in a hierarchical way, building up on those features, very low level features to the actual features of the object it is looking for. जैसे कि अगर for example अगर ये this is an image, अगर एक person की है तो उसमें it will start looking at the edges and corner of your faces and how the face is made out of squares, circles and all these, and then it will slowly learns and towards the end it will make up the whole face of a person. So this is the kind of the architectures which is CNN, idea behind CNN. There are many names in this area, which is key ones are AlexNet, VGG, and then ResNet architecture, which is slightly different, which has some skip connections, which enabled it to go more deeper and more powerful networks. So after, I mean, CNN were developed inspired by our visual cortex, like how our brain works. Like we have many neurons, and which when we look at different things and they different connections between the neurons are established based on what is CNN. It fires different neurons. Similarly, in the CNN, is a hierarchical architecture. A different part of the image are highlighted based on what it sees. Whereas now the next, after the CNN, the next major architecture is which was developed by Google Brain, and that was in 2017. It came with the transformer architecture, which was different from the CNN in a sense that instead of looking at the local features or small filters, it takes the whole image. I mean, transformer was not image based, that was on the text, but then in the computer vision domain, this is the vision transformer, which came in the vision domain to do the same thing which was done in the language domain using the transformers. So basic inner working is same. It's just the input is how it takes the input. That is, it takes the whole image as it considers whole the image as a like a global thing, and it looks everywhere. So it's not like local features. It looks the whole image and tries to find out. There is one thing which is called attention mechanism inside this transformer, which is basically it tries to look the importance of different areas
by looking the context and where it is in the image and then building the whole relationship. So this actually is very powerful, and now you can say that Vision Transformer is state-of-the-art architecture in all of the current vision-based foundation models. So wherever now if you talk about computer vision, और अगर आपने कोई आर्किटेक्चर्स लर्न करने हैं या फाउंडेशन मॉडल्स की बात करती हैं तो आपको डेफिनेटली आपको जो है ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करना है और विजन ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करना है, इसको लर्न करना कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसको यूज़ करना है. The only challenge now with vision transformer is it requires much more large scale pre-training, and it is computationally heavy than CNNs. So going further from the vision transformer, like I said, after transformer is the foundation models. Now idea यहाँ पे ये था कि okay, we have the transformer. Can we train some models which are trained on like massive billions of image data set in a way कि ये you just make it learn all the like so इसका ये था कि you give a billion of data sets and a lot of images so that it learns everything from that data. So later on you can just use it in your own specific area without much training on your own data. So इसमें और labeling भी आपको ज़्यादा. So अगर आप foundation models basically ये हैं कि they are pre-trained on billions of image data, even the text is also input there. और उसकी वजह से ये है कि then when you use it, you don't need a lot of label data, and also you don't need a lot of data. So this way they are very helpful, and foundation models are actually now the key area, and they are used a lot for that. So you don't need to train your models from scratch as well. You use them and then you fine tune on your small data set, and when you also don't have a lot of data. Just trying to click. Here I'm just telling you one of the foundation model, which is SAM, segment anything. This is like a foundation model which is used for segmentation. So this has been trained on a huge number of data. So now because of that, you can sometimes just use it out of the box. So you don't need to even learn on your own data for some of the objects which are very common. So you can just use it out of the box, or you just fine tune this on your own small data. So it has two versions now. It's from Meta, so SAM and SAM2. SAM2 is now also looking at the videos. So SAM was just images, and SAM2 is also can segment on the videos as well. So it does the whole video itself. Ifat, can I please ask you कि अभी हमारे कितना ये और रहती हैं slides या कितना अभी how many more to go? I think I have 32, but I think next one will be a bit quicker. I can go quick. What number are we on right now? 18. Okay. So can I request you to skip the detailed ones और बस थोड़ा सा because हमारा time almost खत्म हो रहा है. So if हाँ latest trends would be great. But अगर कोई detailed वाली हैं तो we can skip those and go on to question answers. Latest trend में भी I think is more about architectures के इस trend is also about के हमने कौन से architectures. So मैं quickly बात करूँगी इसमें फिर then. So इसके अंदर ये है कि like I talked about के vision transformer और उसके साथ hybrid architecture is in now. Hybrid का मतलब ये है कि CNN और combination of CNN और जो है वो transformer. So it's like looking at the global information and the local features together. Then उसके बाद another important trend जो है वो है AI on edge, because of the real time demand and requirement. This is because edge computing is like doing things directly on the device. So this is like in vehicle cameras, sensors. This is really important for the autonomous driving, where you have robots, you have drones, or you have surveillance cameras everywhere where you want real-time performance. Then you need to have everything on the edge. So
this helps with enhancing the privacy, reducing the latency, optimize models on the edge hardwares like GPUs and NPUs. Similarly, the next trend is Gen AI, as you all know. This not only helps you to create, you can also generate some more data, synthetic data in your problem, जो कि helpful होता है. In your case, where you don't have the data and you want some more data, you can do it through the generative AI. Another thing is the 3D vision and depth estimation, which is really important. Like I talked about augmented reality, जिसके अंदर और या आपके रोबोट्स या नेविगेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स की ना सिर्फ 2D उसकी इन्फॉर्मेशन, बट आपको डेप्थ की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए टू सेंस के हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट्स. एंड जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी समटाइम्स आप कोई चीज़ बाय करते हैं जैसे फर्नीचर, एंड देन यू वांट टू सी हाउ इट विल लुक इन योर रूम, where it will place, things like that. So इन सब चीज़ों के अंदर 3D vision और depth estimation भी यूज़ होती है. Then the next trend is multimodal fusions. Multimodal fusion इसमें combination है vision, videos, images, text, tabular data, all those combined together. So ये भी इस area में research भी हो रही है और बहुत सारे models आ रहे हैं. Similarly, vision language model, जिसमें आपने लैंग्वेज को विजन के साथ फ्यूज़ किया ताकि आप क्वेरीज भी कर सकें, वीडियोस से क्वेरीज, टेक्स्ट के थ्रू क्वेरीज, कैप्शनिंग कर सकें और क्वेश्चन आंसरिंग कर सकें. Maybe I will skip this. This is just about these technologies, and I think it will take time. This is one of the bird that wants to be a plane. This is like you can say this is one of the model developed by OpenAI, Sora, which is text to video. It's like it came very late 2024. So this, you give it a text and it generates videos for you. You can check it later on. I will have to, it lets me go to the next slide. And then I think this one is another project, which is, this is really cool. This is a research prototype. Right now it is from Google, and they are trying to develop a universal AI assistant. I think this is worth checking. This incorporates everything which I have talked about, all these multimodal understanding, real-time. Let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They Okay, so I think I'll skip now. Okay, here I'm just, this slide is telling you just like, okay, computer vision has achieved incredible progress, but it's also important to know that there are limitations and sometimes there are real world failures. And that did happen, and there are many cases when computer vision failed. Like for example, Tesla, there has been many autopilot crashes. So one of the news was like, it thought it couldn't recognize a truck, white truck. It thought it's a cloud, and there was a crash. Then in another case, there was in 2015 in Google Photos, they mislabeled two black people faces. They were labeled as gorillas, and that was actually a real case, like mislabeling, and that was due to bias in the training data. You can say that because it was not trained, it hasn't seen the people maybe in the training data, and then it came up like that. Similarly, in the face recognition area, so all these things actually, there are cases when it did fail, and the failure actually, it doesn't mean that computer vision has an issue. It does actually makes us think that, okay, there is definitely, whenever we develop such technologies and products, they does need testing. There has to be fairness, ethics, and
human oversight is really vital in these areas. So as a computer vision engineer, this is our responsibility to research and design everything responsibly. Thank you, Ifat. Can we please move on to the question answer Yes. session now? Okay, so okay, I have this slide of career roadmap. Maybe you can look at this because I Okay. don't think I have anything to tell here because this is just I have listed down Right. So we can just late. leave that on the Yes. thing. Yeah. And we can, if you could share them, we'll share them with our audience. Okay. That's great. So I Yes. think that's it. These are last few slides are about this. So Chalo, I will great. end my Sahi hai. presentation here. Sorry about No. This was lovely and very informative. And बिल्कुल ये तो cutting edge है आजकल. So thank you so much. We can take any questions या अगर chat में किसी ने post किए हैं तो please. प्लीज आप मुझे बता कि मुझे अभी आई कांट सी द चैट सो इफ यू हाँ कैन हमना बता है प्लीज इफ यू कुड रीड आउट द क्वेश्चंस या जिसने पूछने वो खुद से प्लीज अनम्यूट करके पूछ ले ऑडियंस में से. Ma'am, मेरा एक Yes, question ma'am. you go first. So I wanted to ask, coming from a computer science background, when you entered into this field, there was a lot of medical involved. So how did you overcome that? Did you have a prior knowledge or you learned on the go? I will say that I learned on the go. It's a constant learning. So I just did everything by self-learning. And there's now it's just there you have so many resources, and I say you're lucky that there's so many resources. It's all about self-learning, and definitely you need to upskill yourself and stay up to date with the technology because otherwise जो है वो आप बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि इसमें self learning बहुत ज़रूरी है. So definitely through self learning. Definitely. There's one question in the chat. Asya Bibish is asking that if you could suggest some data sets. किस चीज़ के लिए data set? Sorry. आसिया प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके खुद पूछो. Are you there? Is she still online? हाँ आसिया बीबी. मैम. जी अस्सलाम वालेकुम. मैम मैं असल में फेशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस में काम कर रही हूँ ना, तो मैंने इसमें CNN और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स यूज किए हैं और MMEW जो डेटा सेट थी, बट आई डिडंट गेट एनी गुड रिजल्ट्स. तो आप काइंडली मुझे कुछ गुड डेटा सेट सजेस्ट कर सकती हैं उस हवाले से जिसमें मुझे रियल टाइम जो उसकी एक्यूरेसी है और उसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए, क्योंकि फर्दर मैं इसी पे काम करना चाह रही हूँ जब तक कि मुझे कुछ गुड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते. आई थिंक इसको ऑफलाइन ले लें फायजा में भी. आप उनसे जो भी आपका कांटेक्ट है मैं आपको करके और फिर इन डिटेल अच्छा सेंड कर सकती. ठीक है श्योर. उबैदुल्ला आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट एंड आस्क. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा मैडम, मैं हैम 10,000 डेटा सेट पे काम कर रहा था एक PhD स्टूडेंट के साथ. स्टिल आई एम वर्किंग एंड आई एम यूजिंग डेंसनेट 201 model. The problem I'm getting is that the dataset HEM 10,000 is highly imbalanced. So the accuracy of my model reaches about 85.5%, and I want an accuracy above 90% to publish our paper. So what do you suggest us the techniques so that we can reach our goal? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप कह रहे हैं कि एक्यूरेसी. अब आपकी जो मेट्रिक है वो अगर एक्यूरेसी है तो आई थिंक ये एक्यूरेसी जो है एक अच्छी मेट्रिक नहीं है इसको करने के लिए. आई थिंक आपको जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और F1 स्कोर प्रिसीजन रिकॉल जो है वो यूज़ करना चाहिए. आई डोंट नो आपने यूज़ किया कि उसको कि नहीं, लेकिन आप उसको यूज़ करें एज योर मेट्रिक फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. और उसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आपका डेटा इम्बैलेंस है तो उसके लिए आपके जो लॉस फंक्शंस हैं आपने आई डोंट नो कि कितना उसको क्लास वेट्स और के थ्रू जो है उसको जो है देयर टेक्निक्स जिनके थ्रू आप जो है लॉस फंक्शन के अंदर जो है वेट के जो आपकी
माइनॉरिटी क्लास है उसको वेट के क्लास वेट्स के थ्रू उसको जो है कर सकते हैं, दिस इज़ अनदर वे। और उसके अलावा ये है कि आप जो है जो आपकी माइनॉरिटी क्लास है उसके लिए डेटा ऑगमेंटेशन के थ्रू भी डेटा को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप और डेटा लेबल नहीं कर सकते, या आप जो है मेजॉरिटी क्लास में से उसको सब सैंपल कर दें यानी। लेकिन ये है कि मेनली आपको अपने लॉस फंक्शन, क्लास वेट्स और डेटा ऑगमेंटेशन, और थर्ड ये है कि आपकी मेट्रिक जो है वो सही होनी चाहिए। इन चीज़ों के थ्रू आप इसको जो है वो फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन तो मैंने यूज किया है, इसके साथ फोकल लॉस मैंने इस्तेमाल किया और ठीक आप जो लर्निंग है उसकी जो एडम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लर्निंग रेट है उसका। हाँ एडम जो है ऑप्टिमाइज़र आपने यूज़ किया वो तो जी, ठीक है जी। ऑप्टिमाइजर। लेकिन ये है कि आप ये सारा ट्यूनिंग पे है और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मे बी आपको थोड़ा नेटवर्क को भी चेंज करके देखना पड़ेगा। में हमारा जो बेस पेपर है वो एफिशिएंट नेट पे है, मैंने उसको चेंज करके डेंस नेट पे भी चेक किया है, रेज नेट पे भी चेक किया है। डेंस नेट 2001 पे कुछ रिजल्ट अच्छे आए हैं, तकरीबन 85.5%, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो कम से कम जो है वो 90% है, 90 से अबव। उसके लिए अब यही है कि आपको फिर आर्किटेक्चर के साथ प्ले करना पड़ेगा, और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं कि आपको क्लास वेट्स वगैरह देखें, और आई थिंक या अनलेस कि आप इस प्रॉब्लम को देखें नहीं एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम है, आई कांट टेल, बट ये मेन स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप इसको टैकल कर सकते हैं। और सम आप टाइम है कि आप कह रहे हैं कि आपका टारगेट 90 है, बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप वहाँ तक रीच करें, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा, चैलेंज इन द डेटा, कि कितना चैलेंजिंग डेटा है और क्या लिमिटेशंस हैं। और आपने मैट्रिसेस की बात की कि एक्यूरेसी अच्छा मैट्रिस नहीं है, तो उस बारे में अगर थोड़ा सा गाइड करते हैं। असल में हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमने स्किन कैंसर क्लासिफिकेशन करनी है। हाँ जी, तो क्लासिफिकेशन के लिए आप जो है ना वो यूज़ करें कन्फ्यूजन मैट्रिक, प्रिसिजन रिकॉल, ये देखें आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसे भी देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। All right. If you have any other questions, please drop them in the chat. We're a bit off the time, but specific cases, Dr. Ifat will discuss on the portal as well. Yes, क्योंकि it's very difficult to, yes, if you have specific question, I think maybe through the email or anything I can have a look at that and suggest something, लेकिन अगर कोई और general question है तो आप अभी पूछ लें। मैम व्हेन यू डू स्किन एनालिसिस, तो अगर मतलब अब लीडिंग ब्रांड्स जो हैं दे आर यूजिंग दिस कस्टमाइजिंग टेक्नोलॉजी कि आप अपने स्किन के ऊपर जो सा ना वो एक पेन ड्राइव डिटेक्टर को रखें एंड वो आपको डिटेक्ट करा के आपके स्किन टोन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वो आपको कस्टम शेड देता है। Have you do you have any experience in that side? And if you do, what would you recommend? RGB color values or HSV? एक्चुअली जो स्किन टोन है ना उसके लिए आई थिंक RGB के अलावा आप उसको अगर HSV में देखें वो बेटर होगा, ये लैब कलर स्पेस HSV ज़्यादा बेटर है। Thank you, ma'am. So do we have any more questions? Anyone in the chat? Please raise your hands So if you I have. think everyone is trying to digest all this information at the moment. आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने हालांकि इट्स नॉट टेक्निकल लेकिन इट्स सच अ वास्ट फील्ड, आई थॉट कि ये मे बी स्टिल हाई लेवल है बट स्टिल नॉट। नहीं, Listen, but it was really informative and very eye-opening. So it was great, Ifat. I'd like to thank you here, and we'll move towards the conclusion now. किसी का और कोई question है तो portal पे आके you can ask, and we'll forward your questions to Ma'am Ifat. Okay? Hamla, if you could conclude now, please. Yes, so I would officially like to thank you, ma'am. Thank you so much for your wonderful insights, and thank you everyone. आप लोगों की curiosity has made this session very special. And don't forget to fill our feedback form. The link is in the description. And thank you everyone. That would be it for today's session. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you so much, Ifat. Thank you, everyone.